per capita growth rate. So for r greater than 0, the first line portrait for this differential equation is, and this you can see this differential equation has equilibrium points. You can just consider this is f of n is Rn into 1 minus n over k. So this has zeros, n is equal to 0 and 1 minus n over k is 0. So you can see n is equal to k. So n is equal to 0 and n is equal to k are two equilibrium solutions of this differential equation. So if some solution is initially less than 0, then it approaches to minus infinity, it approaches to away from 0. If some solution is in between 0 and k, it approaches to k, and if some solution is greater than k, then S3 approaches to infinity and approaches to k. So 0 is unstable equilibrium point, k is stable equilibrium point. Assalamualaikum sir. Excuse me sir. सर अटेंडेंस होगी, मैंने मेरा अभी नेट आया था। अटेंडेंस थोड़ी देर बाद होगी। अटेंडेंस थोड़ी देर बाद होगी। ब्रेकअप हो रही है। अटेंडेंस थोड़ी देर बाद होगी। अटेंडेंस Well, just take differentiate this differential equation, so you can say just differentiate this because d2 n by dt square is, and just use product rule to differentiate this. So this is r dn by dt into 1 minus n over k as it is, minus r n as it is derivative of 1 minus n over k is minus r dn by dt over k. So just differentiating this, you can see in this equation. Now just take dn by dt common, also taking r common. So this is r dn by dt into 1 minus 2n over k. Just you take 1 minus n over k minus n over k, so this is minus 2n over k. Now using dn by dt is rn into 1 minus n over k. Now using dn by dt is rn into 1 minus n over k. So this is r. So this is r square into n into 1 minus n over k. This is for this dn by dt. 1 minus 2n over k. So this is. So you can see second derivative dn by dt square is 0 for n equal to 0, n equal to k, and for n is equal to k by 2. From here you can find 0. So this is. इसमें से ये लास्ट क्वेश्चन जाते हैं, इसकी समझ नहीं आई। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। जस्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2 n by dt स्क्वायर हो जाएगा, और इसको डेरिवेटिव लेंगे आप यूजिंग प्रोडक्ट रूल फॉर r एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ n dn by dt into 1 minus n over k as it is minus r n as it is derivative of 1 minus n over k is 0 minus 1 over k into dn by dt. तो यहाँ से dn by dt कॉमन ले लें आप, तो यहाँ पे आ जाएगा r dn by dt into 1 minus n over k minus n over k. So this is 1 minus 2n over k. अब dn by dt जो है dn by dt वो इसको आप पुट कर दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ये r
इस r से मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर आ जाएगा और साथ में n इंटू 1 माइनस n ओवर k आएगा और यहाँ पे 1 माइनस 2n ओवर k ये आ गया। For this second derivative dn d2n by dt square, this is greater than 0 for n between 0 and k by 2। जो n जो है वो 0 और k by 2 के दरमियान में होगा तो ये greater than 0 होगा। And also this is for n greater than k। For n greater than k, this is d2n by dt square is also greater than 0। and for n less than 0 और n between k by 2 and k, जब n less than 0 होगा और k by 2 और k के दरमियान में होगा तो ये d2n by dt square जो होगा वो less than 0 होगा। तो जब किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव less than 0 हो तो वो कनकेव होता है और जब किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो वो कन्वेक्स होता है। तो जो है ये t एक्सिस है, ये n एक्सिस है। दिस इज t एक्सिस, दिस इज n एक्सिस। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके इक्विवेलेंट सॉल्यूशन जो है एक n इक्वल टू 0 है, एक n इक्वल टू k है। ये तो दो उसके हो गए इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। तो जब n ग्रेटर देन k है तो सॉल्यूशन जो है वो कन्वेक्स है। तो ये एक कन्वेक्स फंक्शन है, ये कन्वेक्स ग्राफ जो है। और जब सॉल्यूशन 0 और k by 2 के ग्राफ कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स है, यहाँ तक ये कन्वेक्स है। आप देखें कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है और यहाँ से k by 2 और k के दरमियान में जो फंक्शन जो है वो कनकेव है, यानी k by 2 और k के दरमियान में जो सॉल्यूशन होंगे वो कनकेव होंगे, उनका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। तो ये कनकेव है। तो यह सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कन्वेक्स होगा, यहाँ पे कनकेव। जी सर कनकेव को जैसे आप कह रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 से होगा, तो सर हम उसको रिलेटिव मैक्सिमम भी बोलते हैं, तो ये कनकेव वही चीज है। हाँ, और मैक्सिमम पॉइंट होता है वो, ये फंक्शन है। यस सर, ठीक है। तो ये फंक्शन का जो बिहेवियर जो ये यहाँ पे ये कन्वेक्स है और यहाँ पे जो फंक्शन का बिहेवियर है वो कनकेव है। सिमिलरली तो k by 2 और k के दरमियान में जो जितने जो ये सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे वो यानी 0 और k by 2 के ये 0 से लेके k by 2 तक यहाँ तक ये कन्वेक्स होंगे और k by 2 और k के दरमियान में ये कनकेव होंगे। जितने सॉल्यूशंस है ये सॉल्यूशंस हैं और जो सॉल्यूशंस ग्रेटर देन k होंगे, ग्रेटर देन k, तो वो सारे जो हैं वो कन्वेक्स होंगे, कन्वेक्स इस तरह से। तो so you can see from here as t approaches to infinity, जब t इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये सॉल्यूशन k को अप्रोच कर रहे हैं या k को अप्रोच कर रहे हैं ये सॉल्यूशन। और यहाँ भी ये जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होंगे वो भी k को अप्रोच करेंगे जब t इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसीलिए ये जो सॉल्यूशन जो k जो है, k क्या इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है। तो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन जो ये स्टेबल है,
और ये जो और यहाँ पे जो सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे एज टी प्रोसेस टू इंफिनिटी, ये इसका डिस्टेंस यहाँ से इंक्रीज होता जा रहा है, इसका डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, इसका एक्सक्यूज मी डिस्टेंस सर, भी यहाँ पे। हाँ सर ये डायग्राम से ये जो कर्व्स बनने ये अप्रोचेस टू इन्फिनिटी शो कर रही हैं। ये जो गिवन डिफरेंशियल है उसके जनरल सॉल्यूशंस हैं, आप जब उसको ड्रॉ करेंगे तो या जब इसको इंटीग्रेट करेंगे सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर आप आर्बिट्री कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज लेके आप बहुत सारे सॉल्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं। ये ठीक है। तो ये उन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सॉल्यूशन हैं ये वाले। इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं, आप जितने भी ड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू तो सो मच। इनका जो बिहेवियर जो है वो ये है कि जब ये एक्सक्यूज मी यहाँ से सर। स्टार्ट वेट सर वो यहाँ स्टूडेंट से आपको रिक्वेस्ट भेज रही हैं, आप उनको मीटिंग में ज्वाइन कर ले, उनकी क्लास नहीं ज्वाइन हो रही। तो ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये टी इसकी क्या है, ये डोमेन है इसकी सॉल्यूशन। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये इसका ग्राफ है। तो आप देखें जैसे जैसे टी इंक्रीज करता जा रहा है, आप इस सॉल्यूशन को देखें जैसे जैसे टी इंक्रीज करता जा रहा है तो ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे आप टी इंक्रीज करेगा तो ये डिस्टेंस टी एक्सिस से बढ़ता ही जा रहा है। इज इट क्लियर? तो ये जैसे जैसे टी इंक्रीज करेगा तो ये के को अप्रोच कर रहे हैं सॉल्यूशन। ओके, सिमिलरली सॉल्यूशन ग्रेटर देन के, जो के से ऊपर जो सॉल्यूशन है ये वाला सॉल्यूशन, आप देखें जैसे जैसे टी इंक्रीज करता जा रहा है ये इसका डिस्टेंस ये कम हो रहा है टी एक्सिस से, ये नीचे को आ रहा है। ये सॉल्यूशन डिस्टेंस इसका टी एक्सिस से कम होते तो ये के को अप्रोच कर रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन लेस देन के हैं वो भी के को अप्रोच कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन ग्रेटर देन के हैं वो भी के को अप्रोच कर रहे हैं। सो के इज इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है के वो स्टेबल है, तो के इज स्टेबल इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। सो यू कैन सी from here 0 and k are equilibrium solution। जो solution 0 और k के दरमियान में वो भी k को अप्रोच करेंगे, जो solution ग्रेटर देन k है वो भी k को अप्रोच करेंगे। और अगर आप ड्रॉ करना चाहें 0 से लेस जो solution है तो वो 0 से मतलब अवे जाएंगे। जब ज्यादा डिस्टेंस जब टी इंक्रीज करता जाएगा तो वो उससे दूर होते जाएंगे सॉल्यूशन। तो 0 जब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, जो के जो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है। और ये जो पोर्ट्रेट जो है इसको आप कहेंगे फेज लाइन पोर्ट्रेट। सर अभी आपने बोला ना कि ये सॉल्यूशन के साथ जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। सर ये के के अलोंग इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, के पॉइंट के अलोंग। जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब टी लार्ज होगा तो ये सॉल्यूशन के को अप्रोच करेंगे। ठीक है सर। जब टी इंक्रीज करता जाएगा तो ये सॉल्यूशन के करीब होते जाएंगे। आप देखें यहाँ पे जब टी इंक्रीज करता जा रहा है तो ये सॉल्यूशन जो है ये सॉल्यूशन ये के को अप्रोच कर रहे हैं। इसी तरह जो सॉल्यूशन ग्रेटर देन के है वो भी जब टी इंक्रीज करता जाएगा तो ये के को अप्रोच करते जा रहे हैं। सो दिस इज। और हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि के जो है इनके ऊपर असंत होगा। हाँ, n is equal to k is simple।
Now just solve this equation. This is given differential equation. So to solve this equation, you can see just separate variables. So this is dn over n into 1 minus n over k is equal to r dt, and then take integral. So this is and just separating variables and then take integral. So this is integral of dn over n into 1 minus n over k is r integral of dt. Now using partial fraction, so this can be expressed as integral of 1 over n plus 1 over n over 1 minus n over k, and dn is r integral dt. So this can be expressed as integral of 1 over n plus 1 over k minus n dn is equal to r integral dt. So just integrating, so this is integral of this is log of n minus log of k minus n is equal to rt plus some arbitrary constant c1. Yes, sir. ठीक है यहाँ तक. So this is using property of log. Yes. So this is log of n over k minus n is rt plus c1. ठीक है. So this is now taking exponential. So this is n over k minus n is plus minus exponential of rt plus c1. तब माइनस की क्या जरूरत है? क्या? सर प्लस माइनस की खाली प्लस नहीं आ जाएगा? तो मोड है ना इसलिए. अच्छा अच्छा ठीक है. So ठीक हो गया. you can see plus minus exponential c1, you can say that to be some constant a. So n over k minus n is a exponential rt. So n is just solving this, so you can find n. So n is ak over exponential minus rt plus a. Now from here you can see if you take limit t approaches to infinity, then this is just 0. So limit t approaches to infinity, n is limit t approaches infinity of ak over exponential minus rt plus a. तो ये जब t infinity को approach करेगा ये 0 हो जाएगा. So ak over a, so this is just k. So this limit of this is k as t approaches infinity. तो यही मैं आपको पहले जो बता रहा था कि ग्राफ में जो है सॉल्यूशन चाहे n से चाहे k से ग्रेटर हो तो वो भी k को अप्रोच करेंगे, चाहे k से लेस हो तो वो भी k को अप्रोच करेंगे. Yes sir, clear. Yes, sir. Yes, sir. This is if you have some initial condition, then this question is this. You can do this. So this is. Suppose f is some continuously differentiable function from R to R. F is some function defined over R to R and is continuous and differentiable. Then we denote phi. This is notation, some notation phi, and this is just space f naught, and this represent unique solution of df by dt is f of x. X at 0 is f naught. You can see this is some initial
initial value problem. This is ds by dt is f of x at 0 is x naught. This is some initial value problem. Also, you can see this f is continuous, and also this f is differentiable. तो ये continuous है और ये differentiable है, तो इसका solution जो होगा वो unique होगा. तो इसका solution unique होगा, तो उस unique solution को just ये एक notation दी है कि ये phi, this is space x naught, this represent a unique solution of this initial value problem. You can see here x at 0 is x naught, तो ये just एक डिनोट किया है इसको कि इसकी ये जो solution जो है ये इसकी initial value x naught है. Now see another definition. An equilibrium point x naught of R of an autonomous differential equation dx by dt is f of x. And dx by dt is equal to f of x. This is some autonomous differential equation, and this has x naught as an equilibrium point. x naught जो है इसका equilibrium point है. Equilibrium point क्या होगा, तो f of x naught क्या होगा, 0 हो जाएगा. तो x naught इसका equilibrium point है. Where f from R to R is continuous and differentiable. f जो है वो continuous है और differentiable है. So जो इसका equilibrium point होगा वो तो कहेंगे वो स्टेबल है. If for any epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that, तो जब भी x1 minus x naught और x, तो ये solution जो है इस initial value problem, ये जो dt is equal to f of x differential equation, और phi of t f1 minus x naught absolute is less than epsilon for t greater than equal to 0. अगर if for every epsilon greater than 0 there is delta such that whenever f1 minus f naught absolute is less than delta, तो जो उसका solution जो बनेगा उस initial value problem का वो exist ही करे 0 to infinity, और उसका solution का distance f naught से less than epsilon रहे for every t greater than equal to 0. Then we say equilibrium solution, this is stable. And also if there is some delta node greater than 0 such that f1 minus f naught absolute is less than delta node, and also limit t approaches infinity, phi of t x1 is x naught. जब t infinity को approach करे तो phi of t f1 जो है ये solution वो f naught को approach करे, तो फिर कहेंगे f naught जो है वो asymptotically stable है. Then the equilibrium point x naught is asymptotically stable.
And also, if an equilibrium point is not stable, then it is said to be unstable. You can just see from here, uh, K is this differential has equivalent solutions n equals 0, n equals k, and k is asymptotically stable. Yeah. Well, here definition. A function f is called potential energy function for a differential equation df by dt is f of x. This is some autonomous differential equation, and f is continuous and differentiable. Then f is called potential. This f is called potential energy function for this differential equation if f of x is minus df by dx of x. सर एक पार्टिसिपेंट अगर को ऐड कर दें प्लीज. अगर कोई फंक्शन f ऐसा हो जिसका डेरिवेटिव माइनस साइन डेरिवेटिव इज just equal to f, then f is called potential energy function of this differential equation. Now see a theorem. If f is a potential energy function for this differential equation, this is dx by dt is f of x, then f of x of t is structurally decreasing along any non-constant solution x. इसका कोई और solution हो इक्विलिब्रियम solutions के अलावा ऐसे constant solution हो सकते हैं जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे इसके, उनके अलावा कोई solution जो होगा तो f of x of t जो है वो decreasing होगा along any non-constant solution x. Also x naught is an equilibrium point of, also if x naught is an equilibrium point of ds by dt is f of x, if and only if df of x naught over x is 0. तो x naught जो है इसका equilibrium point होगा if and only if derivative of f over df over dx at x naught is 0. If f naught is an isolated equilibrium point of dx by dt is f of x, such that f has the local minimum at x naught, then x naught is asymptotically stable. तो अगर f naught isolated equilibrium point हो इसका के f has the local minimum at x naught जो है f का local minimum हो, then x naught is asymptotically stable.
Well, see proof of this theorem. This is assume that f is potential energy function for df by dt is f of x, and consider x is a non-constant expression of this differential equation. Then d by dt of f of x of t, just differentiate this with respect to t. So use chain rule. So this is df by dx of x of t into ds by dt. Now df by dx is, you can see this is minus f. So this is minus f. Also ds by dt is f. So this is minus f square. So this is minus f of x of t square is, so this is less than 0. So you can say the potential energy function is strictly decreasing along any non-constant function x of dx by dt is f of x. Also, f naught is equal to 0 because f naught is equivalent expression of this differential equation. So this is 0 if and only if df by dx at x naught is 0, because f at x naught is minus df over dx at x naught. So this is df by dx at x naught is 0. So x naught is equilibrium point of df by dt is f of x. df by dx at x naught is 0. Suppose f naught be an isolated point of df by dt is f of x, such that fx local minimum at x naught. Then there is some delta greater than 0 such that uh, df by dx is greater than 0 for f belong to x naught plus delta. And also df by dx is less than 0 for x belong to x1 minus delta x naught. So we show that x naught is asymptotically stable. So choose some f1 belong to x naught plus delta. Then f of phi of t f1 is strictly to 0 to infinity. F5 of space f1 is non-constant function of df by dt is f of x. So phi of t f1 is decreasing for t belong to 0 to infinity and remains in the interval x naught plus delta. Phi का जो इमेज जो है वो x naught plus delta के दरमियान में रहेगा for every t. And limit of phi of t f1 as t approaches to infinity is L, some limit L. This is greater than equal to x naught. So we show that L is equal to x naught. If L is greater than x naught, then there is the constant C1 such that df by dx at phi of t f1 is greater than equal to C for t greater than equal to 0. However, phi of t f1 minus f1 is
integral from 0 to t minus df by dx, phi of x1 ds. So this is just using this, you can see this is less or equal to minus ct for t greater than equal to 0. So this implies linearity is a contradiction as phi of t s1 remains in this interval x0 s0 plus delta 0. So this is not true. So L is equal to x0, and this phi of t x0 as t position. Similarly, you can show it to here x1 belong to s0 minus delta x0. Then then the limit of RT s1 is again x0. So every whenever is less phi t s1 minus s0 absolute is less than epsilon for t greater equal to 0. And also limit t approaches infinity phi t s1 is x0, asymptotically stable. This is some given differentiation. This is ds by dt is minus 2 into f minus 70. Find potential energy function for this differential equation. Also draw phase line portrait for this differential equation. You can see this differential has equilibrium position x is equal to 70. This is f of l, so this is minus 2 into f minus 70, so this has equilibrium position x is equal to 70. To find potential energy function, you can see f of x is minus integral f of x dx. So this is minus integral f of x is minus 2 f minus 70 dx. Now just integrating this, so you can see this is f minus 70 square plus some arbitrary constant c. To find c, you can see this is an initial condition. Potential at x equal to 0 is just 0. So using this initial condition, you can see c is minus 70 square. Now just simplify. So f is x minus 70 square minus 70 square. So this is just f square minus 140x. So this is potential energy function for this differential equation. So for this differential equation, x equal to 70 is an isolated equal point and local minimum for potential energy function f. And also equilibrium solution x equal to 70 is asymptotically stable. So you can see this is Percy phase and portrait. This is potential energy function, and x is equal to 70 is point of minima of potential energy function, and minimum value is this.
Also, this is first line portrait. This is x-axis. This is some solution x is equal to 70. So solution greater than 70 जो है वो भी 70 को अप्रोच कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन लेस देन 70 है वो भी 70 को अप्रोच करेगा. तो equivalent solution as you said asymptotic is stable, and also this is point of minima, and in this neighborhood there is no other point of minima, so this is isolated equilibrium point. Now you can have break for half an hour. Yes, sir. Thank you. सर कब क्लास 12 ज्वाइन करनी है? 8 बजे. ओके.